आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लोज पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस। आज हम लोग प्रोस्पेक्टस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आई जस्ट लेट यू नो व्हाट इज अ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इज इशूड बाय द कंपनी टू invite to the subscriber to buy the share of the companies. Type of the subscribe prospectus की जब हम बात करते हैं, there is a four type of prospectus. Number one, deemed prospectus, shelf prospectus, red herring prospectus, and abridged prospectus. So now let's see one by one. Deemed prospectus का मतलब क्या होता है? Any document by which the offer for sale of securities to the public is made shall be treated as the deemed prospectus. कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो पब्लिक को ऑफर करता है सिक्योरिटीज, उसको हम एज ए डीम्ड प्रोस्पेक्टस ट्रीट करेंगे. So in order to avoid the issue of the prospectus, companies issue share to the another person, like in-house issue per house, which would then make further offer to sale of these share to the public by advertisement, etc. So इसमें क्या होता है कि डिंग प्रोस्पेक्टस में कि कंपनीज इशू हाउस को अपने शेयर इशू कर देती हैं एंड देन इशू हाउस बिहाफ ऑफ द कंपनी एडवर्टाइजमेंट करके उन शेयर्स को बेचते हैं. पर्सन मेकिंग ऑफर वर नेम डायरेक्टर इन द कंपनी. और जो पर्सन ऑफर करता है वो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के. अब जो ऑफर बनेगा, एन ऑफर ऑफ द सेल डॉक्यूमेंट is to be signed by the two director in case of the company, or at least half of the partners in the firm as the case may be. क्या होता है डीम्ड प्रोस्पेक्टस में कि कंपनीज अपनी लाइबिलिटी से बचने के लिए दे डू वन थिंग, दे issue the share to the issue houses and then issue houses are sell the share on behalf of the company. कि हमारी लाइबिलिटीज नहीं बनती है. But because this is a deemed prospectus, so we can say this is a deemed prospectus and all the compliances will be followed. Effect of the deemed prospectus क्या होगा? All provision related to the content of the prospectus and misstatement shall apply automatically. Because we say like this is a deemed prospectus, company is not directly selling the shares, but any third person are involved or indulged in it, and then they are selling behalf of the companies. And directors or like half of the directors are already signed the document. So we say like this is a deemed prospectus and the company is liable. And there's because of this effect, this is the effect of the deemed prospectus. All provision related to the content of the prospectus and misstatement shall be applied. Like companies are not misinformed to the shareholders, so they cannot misuse, not do the mismanagement. Condition for the document to be called to as a deemed prospectus, there is certain condition which is applied. If such issue house make offer for sale of debentures or share within a 6 months after the shares or debenture were allotted to them or agreed to be allotted to them, or at the date when offer was made by issue house, the whole consideration in respect to sale or debenture has not received by the company. Okay, so this is the condition. Like कंपनी ने क्या किया कि डिबेंचर्स और जो शेयर्स हैं वो इशू हाउस को दे दिए और विद इन ए 6 मंथ इशू हाउस को अलॉट होने हुए हैं, तब दे आर स्टार्टिंग सेलिंग टू देम इनटू द पब्लिक. और जब जिस डेट में एट द डेट ऑफ व्हेन ऑफर मेड इशू by the issue house, whole consideration in respect of sales or debentures had not received by the company. जो consideration था, जो money थी, वो company को receive नहीं हुई है, because the issue house is first of all sell those shares and then made the payment to the company. So in these circumstances, we say like this is a deemed prospectus. Okay. Now next come to the offer for sale of shares by the certain number of companies is also deemed prospectus. Okay, let's see what it is. The members or member of the company's individual or corporate body
in consult with the board of directors may offer the whole or part of their holding of share for sale to the public. So जो members है कंपनी को और जो या फिर अगर इंडिविजुअल है या फिर कॉर्पोरेट बॉडी है वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद वो अपने सारे या फिर पार्ट ऑफ द शेयर्स है और वो पब्लिक को सेल कर सकते हैं. And the companies are like the members shall then collectively authorize the company to take necessary action for offer for sale on their behalf, and they shall reimburse the companies for all the expenditure incurred. और जो मेंबर्स होंगे वो कलेक्टिवली ऑथराइज करेंगे कंपनी को कि आप नेसेसरी एक्शन लेके जो हमारे शेयर है हमारे बिहाफ पे आप सेल कर सकते हो, एंड व्हाट एवर द एक्सपेंडिचर्स आर गोइंग टू बी अकर्ड वो कंपनी को रिम्बर्स करेंगी, वो कंपनी को वापस देंगे वो पैसा. The document by which the offer sale to the public is made shall be treated as a deemed prospectus issued by the companies. और जो डॉक्यूमेंट है जिसमें ऑफर कर रहे हैं सेल पब्लिक को वो डॉक्यूमेंट ट्रीट किया जाएगा एज ए प्रोस्पेक्टस बाय द कंपनीज. ओके, सो सेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31 में सेल्फ प्रोस्पेक्टस की हम बात करते हैं. तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? सेल्फ प्रोस्पेक्टस मींस ए प्रोस्पेक्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ सिक्योरिटीज एज इशू फॉर सब्सक्रिप्शन इन वन और मोर इशू ओवर ए सर्टेन पीरियड विदाउट द इशू ऑन फर्दर प्रोस्पेक्टस. तो सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जो कंपनीज बड़ी बड़ी कंपनीज हैं एंड दे हैव लाइक the big project they have, वो क्या करते हैं एक बार प्रोस्पेक्टस इशू कर देती हैं एंड देन दे सी द डिमांड इन द मार्केट कि हमारे शेयर्स की डिमांड कितनी है, एंड देन आफ्टर दैट दे आर नॉट लाइक देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, लाइक एक साल के लिए सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू होता है. सो विद इन अ ईयर they can issue a number of shares and like multiple time वो shares market में issue करते रहते हैं, but the prospectus is only once comes into the market or into the public. ओके, सो सेल्फ प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है कि जो सिक्योरिटीज हैं और जो क्लास ऑफ सिक्योरिटीज हैं उसको इशू करने के लिए सब्सक्रिप्शन को एक ही बार सब लाइक प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं एंड मल्टीपल टाइम दे कैन इशू द शेयर्स. The provision for issuing self-prospectus. A self-prospectus may be issued by the companies at the Securities and Exchange Board India. SEBI may provide by issue regulations. Okay. And the self-prospectus shall have the validity period not exceeding 1 year, which shall commence for date of opening of the first offer of the securities under the prospectus. और जो सेल्फ प्रोस्पेक्टस है उसकी वैलिडिटी पीरियड एक साल की ही होगी मैक्स टू मैक्स, एंड वो जो आपकी काउंट होगी वो तब से काउंट होगी जब फर्स्ट टाइम उन्होंने सिक्योरिटीज को मार्केट में ऑफर किया था. द वैलिडिटी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 year शुड बी इंडिकेट द सेल्फ प्रोस्पेक्टस. सो जो वैलिडिटी है वो एक साल से ज्यादा नहीं है, ये इंडिकेट करती है कि ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस है. And the self prospectus is issued at the time of first offer of the securities in respect to second or subsequent offer of the securities during the validity period. No further prospectus shall be required. और जो self prospectus है वो issue होगा first time first offer जब securities को आप ऑफर करेंगे, एंड इन रेस्पेक्ट टू सेकंड और सब्सिक्वेंट अगर दूसरा या तीसरा चौथा पांचवा ऑफर जो भी सिक्योरिटीज वो आती है ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड, no further prospectus are going to be issued. Okay, and the next, a company filing a self prospectus shall be required to file an information memorandum with the registrar before making of any second or subsequent offer of securities under the self prospectus. That means अगर कंपनी सेकंड या थर्ड और सब्सिक्वेंट कोई भी और जो सिक्योरिटीज है वो इशू करती हैं, शेयर्स इशू करती हैं, तो इन दैट सिनेरियो वो इंफॉर्मेशन वो रजिस्ट्रार को प्रोवाइड कराएंगे. सो वो सेबी को वो इंफॉर्मेशन जो है वो देंगी. कंपनीज फाइलिंग सेल्फ प्रोस्पेक्टस शैल बी रिक्वायर्ड टू एन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम रजिस्ट्रार with registrar making the second or subsequent securities under the self prospectus. तो अगर दूसरा लेके आते हैं तो वो सारी information before the registrar they will submit all the information. The information memorandum shall contain all the material fact related to the
न्यू चार्जेस क्रिएटेड, और जो अगर जो मेमोरेंडम है दे आर विच दे आर गोइंग टू सबमिट बिफोर द रजिस्ट्रार, दे हैव सर्टेन इंफॉर्मेशन लाइक न्यू चार्जेस क्रिएटेड, अगर कोई नई चार्ज क्रिएटेड हुए हैं तो वो इंफॉर्मेशन उसमें होगी। चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बिटवीन द फर्स्ट ऑफर एंड द सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ द सिक्योरिटीज, अगर फाइनेंशियल पोजीशन में कंपनी की कोई चेंजेस हुए हैं, so these things also included in the memorandum which they are going to submit before the registrar. ओके, एंड सच अदर चेंजेस एज मे बी प्रेस्क्राइब, और इसके अलावा भी अगर कोई भी और चेंजेस हुए हैं सिक्योरिटीज में, सो ऑल दीज चेंजेस आर गोइंग टू बी इंक्लूडेड एंड दे आर गोइंग टू सबमिट बिफोर द रजिस्ट्रार. So where a company has received application for a lot of the securities along with the advance payment of subscription before making of any such changes, then the company shall intimate the changes of such application. If the applicant express a desire to withdraw their application, the company shall refund all the money received as a subscription within 15 days thereof. अगर कोई भी जो सिक्योरिटीज खरीदना चाहता है एप्लीकेंट and they made certain changes in the subsequent securities, then after knowing all those changes, if applicant want to withdraw their application, then in that scenario company must shall have to refund the money within 15 days. सो अगर कोई कंपनी ने जो अपनी सिक्योरिटीज में कोई चेंजेस किए हैं एंड आफ्टर डूइंग दोज चेंजेस, अगर एप्लीकेंट चाहता है कि नाउ ही डज नॉट वांट टू बाय दोज सिक्योरिटीज एंड ही वांट टू विथड्रॉ हिज एप्लीकेशन, इन दैट सिनेरियो विद इन 15 डेज कंपनी को उसके पैसे रिफंड करने होंगे. Okay, so and in information memorandum together with the self prospectus shall deem to be prospectus. Okay, so now red herring prospectus. Now let's see what is the red herring prospectus. Red herring prospectus क्या होता है? The term red herring prospectus means prospectus which does not include complete particulars of the quantum or price of the securities included. So red herring prospectus में क्या होता है? Companies जो है वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करती, लाइक व्हाट इज द प्राइसेस ऑफ द शेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड व्हाट इज द क्वांटम, हाउ मेनी शेयर्स दे आर गोइंग टू बी इशू इन द मार्केट. बेसिकली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का यूज मार्केट में कंपनीज ये देखने के लिए करते हैं कि वो अपने शेयर्स की प्राइसिंग कितनी रखें, कितनी क्वांटम, लाइक दे आर जस्ट एनालाइजिंग द मार्केट. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस प्रोस्पेक्टस. So companies proposing to make an offer of securities may issue a red herring prospectus prior to issue the prospectus, section 32 clause 1. Okay, so a company shall be red herring prospectus with the registrar at least 3 days prior to the opening of the subscription list and offer, सेक्शन 32 क्लोज 2. सो जो कंपनी है अगर इफ दे आर फाइलिंग द सेल्फ प्रोस्पेक्टस बिफोर द रजिस्ट्रार, तो ओपनिंग के 3 दिन पहले दे आर फाइल द एप्लीकेशन बिफोर द रजिस्ट्रार. A red herring prospectus shall carry the same obligation as applicable to the prospectus. और जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है वो सेम ऑब्लिगेशन उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे जो प्रोस्पेक्टस के ऊपर अप्लाई होते हैं. Any variation between the red herring prospectus and prospectus shall be highlighting it as a variation in the prospectus. अगर कोई भी वेरिएशन होता है लाइक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, तो वो हाईलाइट होगा कि दिस इज अ वेरिएशन, लाइक सेक्शन 32 क्लॉज 3 में दिस इज रिटन. And upon a closing of the offer, the prospectus is stating the total capital raise and the closing price of the securities. Any other details that are not included in the red herring prospectus shall be filed with the registrar and the Securities and Exchange Board, section 32 क्लॉज 4. और जो क्लोजिंग ऑफर है प्रोस्पेक्टस का, जो कैपिटल रेज हुई है, जो क्लोजिंग प्राइस था सिक्योरिटी का, ऑल दीज डिटेल्स including in the red prospectus shall be filed before the registrar and SEBI. Okay, article 32 clause 4. Okay, now Abridged prospectus. अब Abridged prospectus क्या होता है? section 2 clause 1 of the Companies Act 2030 outline an Abridged prospectus. It means a memorandum containing the silent features of the prospectus as per the regulation specified in the Securities and Exchange Board. Section 33 mandate the issue of an application form of the securities along with the Abridged prospectus. So Abridged prospectus क्या होता है कि आपको जब like companies एक short like features and the silent feature of the memorandum, all these will be along with the application.
So abridged prospectus section 33 shall not be applicable to the application from issue for a valid invitation to the person to engage in a underwriting agreement with regard to such securities or सिक्योरिटीज डेट वर नॉट ऑफर टू द पब्लिक। लाइक जो एब्रिड प्रोस्पेक्टस होते हैं वो इस केस में इशू होते हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू इशू ए पब्लिक प्रोस्पेक्टस, दे आर जस्ट गोइंग टू ऑफर टू द प्राइवेट पर्सन ए कॉपी ऑफ द प्रोस्पेक्टस शैल सेंड टू द एनी इंडिविजुअल हु रिक्वेस्ट टू प्रायर टू द क्लोज ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट एंड द ऑफर। इफ ए corporation fail to comply with the provision of the section 33, it would be liable to penalty of the 15,000 rupees of for each default. So if they are using the abridged prospectus and the applicant asks for the prospectus, in that scenario, if they are not going to comply with the regulations, then they have to be the liable for the penalties of 15,000 rupees for each default. SEBI release regulations governing discussion in the abridged prospectus for front cover page of the offer document via circular number so and so on dated 4 February 2022. So why is prospectus is issue? So the prospectus is issued to invite to the potential public and investor to subscribe to the securities. So this is the basic issue why we are issue the prospectus. How many investors benefit from a prospectus? The prospectus includes details about the company's, its management, financial stability, and other relevant information presented to the potential investors. So when prospectus is not required to issue, अब prospectus का issue करने की जरूरत नहीं है when an offer is made in connection with the bona fide invitation to the person to enter into the underwriting agreement with respect to shares or debentures. Second, when shares or debentures are not offered to the public. Number 3, where the offer is made only to existing members or debentures holders of the companies with the, or without a right to renounce. Section 26 clause 2, for example, when shares are placed privately to less than 15 people. So in that scenarios, company don't need to issue the prospectus. Where the shares or debentures offer are in all respect uniform with the shares and debentures previously issued and dealt in a quoted on a recognized stock exchange. Section 26 clause 2. तो जहाँ पे जो shares और जो debentures है वो यूनिफॉर्म जो प्रीवियसली इशू किए गए थे उसी सेम क्वांटम पे डील कर रहे हैं और जो रिकॉग्नाइज्ड है सेबी में, देन दे आर डोंट नीड टू इशू द सेपरेट प्रोस्पेक्टस। व्हेन इन्विटेशन टू द पब्लिक और सब्सक्रिप्शन टू द शेयर्स और द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनीज इज मेड in the form of newspapers advertisement, section 13. So what is this, like the advertisement in the newspapers deems treat as a deems prospectus. So that's why there is don't need to be issue a separate prospectus. A private company is not required to issue prospectus. और जो private company है उन्हें कोई prospectus issue करने की जरूरत नहीं है. So this is all about the prospectus. Thanks for watching the videos. Like, comment, share, subscribe the channel. Thanks for watching.